आज की दो बड़ी कंपनियां, जिसमें से पहली है M&M, जहां कल नंबर्स भी आए, नंबर्स कई सारे फ्रंट पे, इनफैक्ट ब्रॉड बेस्ड आपको हर बिजनेस सेगमेंट में इनकी ग्रोथ देखने को मिली है। खास बातचीत अनीश शाह, महिंद्रा ग्रुप के CEO और MD हैं, उनसे बातचीत की पूजा ने। आइए आपको पूरे वो कॉन्वर्सेशन सुनवाते हैं। चलिए हम बात करते हैं महिंद्रा के नतीजों की, और नतीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अनीश शाह, ग्रुप CEO एंड MD ऑफ महिंद्रा ग्रुप। सर थैंक यू सो मच आज जी बिजनेस को अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर इस बार के नतीजों में हमने देखा डिसेंट नंबर्स थे, इनलाइन ही नंबर्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही देखने को मिले। स्पेशली जो आपके फार्म मशीनरी है वहाँ पर इस बार हाइएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू पोस्ट किया कंपनी ने। ऑटो और फार्म में हमने देखा दोनों ही तरफ प्रॉफिट और मार्जिन के फ्रंट पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। इसके पीछे की क्या वजह थी, किस फैक्टर्स के वजह से हमने ये ग्रोथ देखी इस बार? Namaskar. Overall results are very, very strong. 24% increase in profits after multiple quarters of very significant growth as well. The farm mein we are seeing many factors. Ek to rural demand has come back very well. Government spending is good in rural areas. Because of the monsoon, the sentiment is very good as well. तो जो नमी हमने देखी थी पिछले साल is much better now, and we are seeing a good sentiment, good growth in the tractor industry. Our business has performed very well. हमारा market share is now 45.2% in the first quarter. It is the highest ever we've had in any quarter so far in our history. Margins continue to be very strong as well in the farm business, and therefore that positions as well. And similarly, auto has done extremely well, which I'm sure you've seen. Yes, and sir SUV वॉल्यूम्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमने देखा। क्वार्टर 1 में भी आपने जो भी नए लॉन्चेस किए उसका भी इस बार सपोर्ट मिला है। 22% वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। तो कंट्रीब्यूशन कितना था उसका रेवेन्यू में, और आगे क्या प्लान है आपके इसको और स्केल अप करने की, स्ट्रैटेजी क्या होगी गोइंग फॉरवर्ड, और किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं SUV में? So auto contribution, 22% growth is in an industry that is largely flat. So our market share has gone up 5.7 percentage points, and that is a significant jump. Again, margins have stayed well. We are seeing some pressure from commodity prices, in particular steel, as that price goes up. It's causing our prices to go up with customers as well. So we're hoping it doesn't result in more inflation. But on balance, our auto business is doing extremely well. The new products have got very, very good support and feedback from customers. So the EVs are doing very well. We are the highest market share from a revenue standpoint in EVs already, and that's something that we feel will continue. You spoke about EVs, सर। रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है और सभी ऑटो जो EMs प्लेयर्स हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं इस वक्त। आपका क्या टेक है सर, कितना इम्पैक्ट अभी तक रहा, क्या आने वाले क्वार्टर में इसका और भी इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? No impact so far, और आने वाले क्वार्टर में we feel that it's going to be again almost none, because we are finding solutions. The semiconductor crisis was in some ways a good learning for us that we're deploying here in terms of rapidly finding solutions for all various parts that have permanent magnets. So we feel comfortable right now that we will have really no impact from it at this point. सर आपने अभी हाल ही में SML आइशुज़ू के एक्विजिशन की भी घोषणा की है, और हम देख रहे हैं इस पूरे स्पेस में अगर LCV सेगमेंट की बात करें थोड़ा लो ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस अधिग्रहण के बाद अब आगे आप इस पूरे स्पेस को लेकर किस तरह की ग्रोथ आउटलुक आप शेयर करेंगे? The commercial vehicles has been low growth, and that is one that we feel will improve because the fundamentals in the economy are strong, and SML positions us very well. We double market share from a small base, goes from 3 to 6% overall, but that is a good foundation for us to start building further, and our goal is to get to a 12% market share beyond that. You spoke about rural sentiment is looking very fine, और अब मानसून भी पिकअप हो चुके हैं, फेस्टिव सीजन में भी अब एंट्री करने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या तैयारी है आपकी, और अगर अर्बन सेंटिमेंट की बात करें तो वहाँ पर डिमांड सिनेरियो कैसी नज़र आ रही है आपको? क्या वहाँ पर आगे आप थोड़ा पिकअप देख रहे हैं? तो अर्बन में हम पिकअप नहीं देख रहे अभी। देयर इज स्टिल अ स्लो डाउन, एंड इट इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज all the fundamentals, as I said, are in place. We've got lower rates, liquidity is good, government spending is good. So what would be the reason, sir? Our sense is it's more sentiment at this time. And
there will need to be some triggers to change that sentiment. Maybe the festive season will be a good trigger to change it. But the foundation is again there, and we feel that it's just a matter of sentiment. I do feel very positive about the second half of the year, and I think we will grow well there. FY26 के लिए एज आई सेड फेस्टिव सीजन की भी अब शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कुछ नए लॉन्चेस आप प्लान कर रहे हैं? More on August 15th, we have a reveal with regard to our auto launches and a new platform. तो हम तभी बात करेंगे. सर अब हाल ही में जो बड़ा डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर भी हम देख रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें पॉलिसी लेवल्स पर भारत कर रहा है. अभी हाल ही में यूके FTA का के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं और कितना सिग्निफिकेंट है ये इंडिया के लिए? एक्सपोर्ट्स मार्केट कितना ओपन होंगे इससे? So it is a very positive development, and I would give a lot of credit to the government. I think it has been done brilliantly. It is a very good balance. It's a win-win for both countries. Exports will get a boost. It also, in many ways, encourages manufacturing in India through innovation, through partnerships, and it is very balanced. So we feel that this FTA will go a long way in not just exports, but positioning India better on the world stage. और अगर M&M की बात करें तो EV लाइनअप के लिए आप किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं इस अग्रीमेंट के बाद? So we expect to export to the UK and compete in the UK with various different brands in the market there, and we feel that will be a very good opportunity for us. सर एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ ग्लोबली, अब US ने टैरिफ की घोषणा कर दी है. हालांकि भारत सरकार कह रही है कि वो जो भी फैसला लेंगे आने वाले समय में वो भारतीय कंपनियों के हित में ही लेंगे और इस पर आगे बातचीत भी होगी. बट आपका इस पूरे जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर आपका क्या कहना है, क्या टेक है? So I would say, one, it is not material from our standpoint, but I have full faith in the government taking the right actions for the country and establishing the right balance as well. सर कपल ऑफ क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ हम देख रहे हैं कि CV और SUV मार्केट अब हाईली कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो ऐसे में किस तरह की प्राइसिंग डिसिप्लिन आप आने वाले समय में इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं सर? Overall, we are seeing pressure on some commodity prices, especially steel, as I mentioned. That is one that will remain in the foreseeable future at least. But beyond that, we feel that it will be the overall economic pickup that will raise the bar for commercial vehicles and start the growth engine there as well. And hopefully it will start in the next few months, maybe again with the festive season. Pricing pressure may be there, but I think we'll just have to see as it goes along. We are hoping that inflation doesn't come back and it stays low. That allows rates to stay lower as well. और सर जो PLI इंसेंटिव्स अभी हुए हैं, ऑफ कोर्स EV सेगमेंट के लिए भी काफ़ी सारे पॉलिसी लेवल पर बात की जा रही है. अगर ऑन ग्राउंड देखें तो कितना मटेरियलाइज हुआ है ये, और क्या कॉस्ट के फ्रंट पर, प्राइसिंग के फ्रंट पर आपको इसका कुछ फ़ायदा मिला है अभी तक? So it will materialize now. We will put in the data that we have for PLI. It is an important incentive because that was the reason why we invested. The returns were much lower or negative without PLI, and with that coming in, it gets back to a reasonable set of returns that allowed us to invest in electric vehicles. So it was a very good step by the government, something that was required to jumpstart EVs, and it has achieved what it needs to. सो वन लास्ट क्वेश्चन, अब ये क्वार्टर तो काफ़ी अच्छा रहा, इन लाइन ही नंबर्स रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड FY26 के लिए ओवरऑल क्या आउटलुक होगा आपका मार्जिन्स को लेकर, और सेल्स ओवरऑल कैसी देख रहे हैं, उसका कुछ गाइडेंस अगर आप शेयर करें तो? So we have talked about SUV growth at mid to high teens for the year, and that is something that we continue to maintain. And overall, we feel good about our trajectory and where we are headed. All right. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Thank you, Pooja. Thank you.